Good morning everyone. uh, so this is my breakfast today. बहुत दिन बाद मैं अपना again, and this is where I am looking for the Sensex, and it is for the HDFC Bank share price, right? So it's going up. So कौन कहता है कि you can't have a healthy life in 9 to 5 job. It all depends how exactly we maintain, how much motivated and determined we are. Now after having this breakfast, I will go and I will start. I have actually a couple of interviews to take today. And today we will talk about the TOSCA framework, right? See, when as a product manager, right? जब आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो सबसे की पॉइंट क्या होता है एज ए पीएम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टू आइडेंटिफाई एंड फ्रेम द प्रॉब्लम इन अ राइट वे, राइट? पीएम का क्रिटिकल रोल ये नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन यू विल कम अप विद, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट द फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. और जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा, लाइक व्हाट इज़ द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, देन you feel that you have already achieved something as a product manager, because most of the cases as a PM, you know uh, like they are not even able to understand, or they're not able to create an impact because they are not solving the right problem. So in order to come up with a right problem, what kind of what are the factors, what are things we can keep in mind when we are solving, or when we are creating a problem, when we are creating a right problem statement. तो उसके लिए we have a framework that is called TOSCA, and it's a amazing framework. Like most of the organization people, as like of the product managers, uses this framework. Though like it is not so popular, but still like people are using it in a different way, maybe not exactly utilizing the same term, but all in all, like they are considering all these factors, right? If they are coming up with the right problem statement. But if you have to study, or if you have to just see that how we can do it in a structured way, or maybe like more formalized way, so let's go ahead with the TOSCA framework. सी टॉस्का फ्रेमवर्क जो है, सबसे पहला इसका टी का जो फुल फॉर्म है, दैट इज ट्रबल, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इज we start by ensuring, or by understanding what is the symptom that makes the problem real, or what is the issue we are dealing with, right? That is like, what is the trouble, first of all? What is the pain point? What exactly you know is basically impacting the the end users? Like, what exactly it is, you can say it could be frustrating. Like, what exactly it is what could be the pain point, or what is frustrating the end user? That could be your trouble. Owner is basically understanding uh, who, like is the who is the user, or who is the end person who is frustrated with it, like or frustrated with the problem which you have, or the issue which you have identified, right? So that's where you try to understand about the person who is uh, who is facing or frustrated about that issue. And maybe like when you are when जब हम लोग बताते हैं, या जब हम लोग ये सीखते हैं कि जो एंड यूज़र है उसके इशू क्या आ रहा है, तो उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ एज ग्रुप इज़ कमिंग अप, उसका सोशल डेमोग्राफिक क्या है ना, what is his daily routine, why exactly is frustrated. So trying to understand that person, what is his age group, is he literate or not, from which demography, from which city he is coming up. So all these things we study when we are study the user for which we are trying to solve that issue, right? फिर आता है हमारा कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिफाइन, राइट? कि
ठीक है, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है, या जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला, बट हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट कि हमने हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू क्वान्टिफाई जो भी हमने सॉल्यूशन दिया है उसके हम क्वान्टिफाई कैसे करेंगे कि ये जो हमने सॉल्यूशन दिया है या ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे तो वो सही ना, या मतलब उसको कैसे हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट, राइट। सो फॉर दैट वी हैव दिस सक्सेस क्राइटेरिया, राइट। जैसे मान लीजिए आपने एक साइन इन बनाया, ठीक है, साइन इन बनाया जिसमें आपने मल्टीपल साइन इन रखे हैं। एक रखा है जिसमें यूज़र क्रिएट करता है अपना खुद का अकाउंट पासवर्ड, एक होता है जिसमें यूज़र डायरेक्टली लॉग इन इट विद सम अदर ऑथेंटिकेटर, एक हो गया लॉग इन यूजिंग गूगल का बेसिक सिंगल साइन ऑन। नाउ आपने ये स्टडी किया कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूज़र्स के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई एज ग्रुप है मोर देन 25 to 35, 25 बिटवीन 25 to 35 लाइक, एंड लाइक, और वो मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा डिजिटली एक्टिव है ना, और ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट, और ही बेसिकली क्रिएट्स प्रोफाइल इन डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स। तो उसके लिए क्या सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि पासवर्ड रिमेंबर करना। तो अगर मान लीजिए आपने वो पॉइंट पकड़ा है, आपने सोच लिया कि ओके लेट मी गिव हिम द साइन इन ऑप्शन यूजिंग देयर ओन जीमेल अकाउंट, तो नाउ यू विल सी कि कितने लोग एक्चुअली जीमेल अकाउंट से साइन इन कर रहे हैं, राइट। What is the average increase in that rate, what is the success criteria, like what is the success, how many times if they are logging it with the Google, like they are able to successfully log in, right. So all these things you try to measure and just try to create a benchmark. Okay, if this particular uh, variable meets a particular number or particular percentage increase or some or any metrics, uh, uh, then you can say that okay, I have actually, or this this solution has actually met a particular uh, benchmark, or a particular, you can say that okay, I have actually, this is what I was looking for. Let's say you might be thinking अगर मैंने साइन अप गूगल से चालू कर दिया, इसे कर दिया, तो you might be thinking okay, let's say 30% 20% would people would be logging using the Google sign up. Okay, so in that case, if it is happening, if you are able to track, if you are able to achieve that number, then it's a kind of like okay, this is you have actually created the impact by by bringing up that solution and people are using it, right. Now अब कोई भी आप प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन निकालते, राइट, देयर विल बी सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इन केस एनीथिंग, मतलब क्या गलत हो सकता है और आपको किस चीज़ के लिमिटेशन में वो वो प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर फीचर वो लॉन्च करना है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द कॉन्स्टेंट्स, right, and finally is about the actors. Now see, like as a PM when you're working, it's not like that you will be the only person who will be developing or who will not or who will be doing marketing and everything, and or maybe you are the only player in the market, right? That's not the case. So कौन से स्टेक होल्डर्स आपको कंसिडर कर आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, लाइक व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो आपके स्टेक होल्डर्स जैसे कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो हो गए जो कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या लीडरशिप हो गया, या सेल्स टीम हो गई, मार्केटिंग टीम हो गई, लीगल टीम हो गई, कंप्लायंस टीम हो गई, बहुत सारी टीम्स हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो हो गए जैसे कि जिसपे हो सकता है कि जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है मोस्टली, बट स्टिल दे हैव द इन्फ्लुएंस। मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, मान लीजिए कॉम्पिटिटर ने कोई और बेटर साइन फीचर निकाल दिया जिससे जिससे हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम स्टेट, आपका जो सॉल्यूशन है, जो अगर सेम मार्केट में आप कर रहे, सेम मार्केट के लिए आप बना रहे हैं, हो सकता है उतना पेनिट्रेशन नहीं हो, मे बी दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर इज प्रोवाइडिंग द सेम सॉल्यूशन एट अ मच चीपर प्राइस, और इट कुड बी एनीथिंग। तो ये हो गए आपके द स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में ध्यान रखते हुए यू विल बी क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड यू हैव टू एक्चुअली communicate that particular problem statement to wide stakeholders, and even not only that, maybe you have to take the inputs, take some insights from other stakeholders also, and then you have to actually create the solution which not only meets the user need but also the business need, right. So this is a very holistic framework which I could have find, and I found it very useful, and I thought of sharing with all of you. I believe you will like this content,
and you will like this framework. Maybe you might also utilize this framework in your problems when we are creating the problem statement. And I hope you like this video. If you like, please go ahead, hit the like button and subscribe my channel, or in case you want some other similar content, probably just go ahead and drop me in comment. I will try to incorporate, or try to bring or create the content around those uh, areas. Till then, keep learning, and bye.